So let us consider the concept of impulse and the law of conservation of momentum. Just wait. Okay, so let us see. I hope you can see the screen. ये हमने कल फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के टेक्निक्स ऑलरेडी सीखे थे. So let us move further in this lecture. Yes. देखो होता क्या है ना कि already know that there are law of conservation of momentum, right? Yes. So we have already that law of conservation of momentum tells us simply that the total momentum before the collision is always equal to the total momentum after the collision, right? And depending upon that, if suppose the two bodies are just moving in the same direction, suppose like this is the body of mass m1 and this is the body of mass m2, and both of them are moving in the same direction with suppose the speeds like u1 and u2, then when they will collide with each other, then they will exert some force on each other. तो क्या होगा कि जब ये collide करेंगे एक दूसरे के साथ, suppose they are in contact for very small time t, then in that case the first body will just exert a force on the second body, which we can call it as F21, and at the same time the second body also will exert the same force on the first body, which we can call it as F12, no doubt. And these two forces will just be equal and opposite in direction. And after the collision, these two bodies will just start moving with the different velocities. Like we can say the first body of mass m1 will just start moving with the velocity v1, and the second body may start with the velocity v2. So these are the velocities of the two bodies just after the collision, v1 and v2, in this way. So according to the law of conservation of momentum, we can just say that this m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, that means the law of conservation of momentum is always hold true or is always satisfied in every collision. हर collision के अंदर law of conservation of momentum तो satisfy होता ही होता है, बिल्कुल. लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना कि law of conservation of kinetic energy, if we just focus on kinetic energy, then it may be or may not be conserved, because it may happen that the kinetic energy is fully conserved, or it may happen that the kinetic energy is partially conserved, or the kinetic or it may happen that the kinetic energy is maximum lost. ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा kinetic energy loss हो गया, ऐसा भी हो सकता है. So depending upon that,
we define the type of collisions. Okay, so we have to consider in today's lecture most especially the types of collisions. What are the types of collisions? मतलब collision कितने प्रकार के हुआ करते हैं? Collision मतलब इन दो कोई भी दो bodies का आके टकराना, उसको बोलते हैं collision. बट ये कौन से टाइप के हुआ करते हैं? तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहला जो टाइप है तो उसको हम बोल सकते हैं it is the elastic collision. Remember, this is a very ideal type of collision. Elastic collision, the first one. The second thing we can just say that it will be a inelastic collision. In general, inelastic collision, no doubt. This is the second type of collision we can say. And the third type of collision we can just talk about is just nothing but a perfectly inelastic collision. See here, perfectly inelastic collision. Okay, अभी इसमें क्या है ना कि perfectly inelastic collision एंड कभी-कभी इस इलास्टिक कोलिजन को भी कभी-कभी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं गड़बड़ी से. तो ये जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये दोनों के बीच में देखो फर्क है. ठीक है, और इन जनरल ओनली इनइलास्टिक कोलिजन, दैट इज अ डिफरेंट वन, different type of collision. There are three types of collisions we can see. If we just see by examples, तो इनके एग्जांपल्स अगर देखेंगे ठीक से तो पता चलता है कि अगर सपोज एक बॉल है, ये सपोज एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है ना. If you just see the example, in the first case, suppose elastic collision का example अगर लेते हैं, ठीक है, this is the elastic collision, this is the inelastic collision, and suppose here we can see the perfectly inelastic collision. Okay. So what you say? If we have a ball and point here, so it will move in the downward direction slowly initially, but after some time it will just hit the ground at this particular point, suppose, and just will bounce back. ठीक है, अगर सपोज रबर का अगर बॉल है तो ये बॉल यहाँ से फिर से ऊपर तरफ बाउंस करेगा, और जैसे ही वो बाउंस करेगा तो ऊपर जाके अगर सपोज सेम हाइट पे अगर जाके आता है, अगर वो रबर का बॉल है तो हो सकता है कि वो यहाँ पे फिर से आ जाए. ठीक है, इट विल जस्ट अगेन reach at the same height exactly wherever it was released with. So if this happens, then this is an example of this elastic collision, we can just see. But in case of an inelastic collision, if suppose the same ball is just dropped from the same height, then it will just move in the downward direction initially in a straight line, and it will just hit the ground at a particular point here, suppose. तो यहाँ पे वो ground को hit करता है. So जैसे ही वो hit करेगा तो it will just return back, but it will not reach up to the same height as it was released with, but it will just reach at some height which may be 50% or it may be 80% or just 20% of the height which is it was released with. And in that case, we can just say that this ball is just a example of inelastic collision. The collision made by this ball with the surface of ground here is the second type, that is inelastic collision, because after this point the ball is going to return back in the downward direction and reach at the surface, and again will bounce up, but again it will just reach up to the somewhat height, and again it will just turn its journey in the downward direction and again bounce in this way. तो ये इस तरह से चलता रहेगा, नो डाउट. लेकिन इसमें हमको समझने की बात यह है कि it will not get elevated up to the same point once again where it was released with. अगर उसने यहाँ से H1 इतने हाइट से अगर वो रिलीज किया था, तो inelastic collision के अंदर होता क्या है ना कि it will just reach up to the height H2 only, where H2 may be less than H1. Here we can just see clearly from the diagram also that this H2 is going to be less than H1. But in this case, elastic collision के केस में क्या होगा? ये देखो H1
and this is suppose H2, then we can just say that this H1 is going to be same as H2, no difference at all. So in this case, we can just say that this will be a elastic collision or perfectly elastic collision, we can say. But in this case, second case, we can have this as a inelastic collision, not perfectly, but inelastic collision. ये हम समझ सकते हैं. But in case of the perfectly inelastic collision, what happens is, suppose this is ground, then and suppose the ball is just released at some height or same height every time as in the previous two cases, then the ball will just fall down and make a collision with the ground surface, no doubt. But as soon as this ball just makes a collision with the ground surface, it will just stick to the ground here in this way. Suppose वो ground के साथ ही चिपक के बैठ गया, it is not bounced up. Okay, it would not bounce up, but it will just stick to the ground forever and remain there forever. तो वहां पे वो पड़ा रहेगा, just like a wax ball. ठीक है ना, मोम का बना हुआ एक बॉल इमेजिन करो, जो अगर हमने यहाँ से, या क्ले का बॉल इमेजिन करो, क्ले जो मिट्टी का बना हुआ जो ये होता है, गोला होता है, वो अगर सपोज हम यहाँ से छोड़ देंगे तो वो सीधा जाके नीचे जाके बैठ जाएगा, चिपक जाएगा जमीन के साथ. तो जब ऐसा होता है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ perfectly inelastic collision in this case. So because we can see clearly that how the these are the three types of examples. If we just compare the kinetic energies, then here we can just say that the kinetic energy of the ball just before the collision here at this point here, you can just say it is suppose KE1 or KI, you can say KI, and just the kinetic energy just after the collision, the kinetic energy the ball will have, it is suppose KF. So here in this case, we can just say that the kinetic energy is fully conserved. That means the total kinetic energy before collision and the total kinetic energy after collision is going to be the equal to each other. ये दोनों जो है वो बराबर रहने वाले, no doubt. लेकिन यहाँ पे अभी देखो इस सेकंड केस में जिसमें inelastic collision जिसको हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि the kinetic energy of the ball before the collision is actually going to be higher. You can call it as Ki. But the kinetic energy just after the collision is going to be lesser than the kinetic energy just before the collision. That means the kinetic energy, initial kinetic energy is going to be greater than the kinetic energy after the collision. That means final kinetic energy we can say. And hence we can just have the loss, some loss in the kinetic energy in this case here. So you can see the initial kinetic energy is greater than the final kinetic energy. This happens in case of inelastic collision, no doubt. And at the same time, if we just compare this third collision here, तो third collision के बारे में अगर बात करते हैं तो पता चलेगा कि kinetic energy of initially kinetic energy is very much high, but actually kinetic energy, final kinetic energy here is going to be 0, and hence we can just say that this Ki minus Kf is going to be maximum. Remember, the loss in kinetic energy here is going to be very much large. It cannot इससे ज़्यादा loss हो ही नहीं सकता है. This is called as a loss in kinetic energy, and this loss in kinetic energy is going to be maximum in case of this perfectly inelastic collision. Remember, so this is the speciality of perfectly elastic collision. That means loss in kinetic energy is going to be maximum here. Here the loss in kinetic energy is there, but it is not maximum in this case. The kinetic energy, loss in kinetic energy is not maximum. We can call it as delta K here. So delta K is not maximum, but it is not 0 also. But here in this case, the loss in kinetic energy is going to be 0 perfectly. That means there is no loss in kinetic energy at all. In that case, we can call it as a elastic or perfectly elastic collision here in this way. Getting all of you the idea of elastic, inelastic and perfectly inelastic collision. देखो तुमने कभी कई बार ये किया होगा
आपको याद होगा कई बार एक बॉल दिया जाता है, सपोज ये ग्राउंड है और ये सपोज यहाँ पे एक वॉल है, दिस इज द वॉल, and suppose that there is a boy at this point, and suppose he throws a ball so with some speed towards the wall. ये आपने भी कभी किया होगा कई बार। तो जैसे ये बॉल आगे जाता है, सपोज इस तरह से यह इस वॉल के ऊपर पटकता है, और अगर रिटर्न आता है ऑलमोस्ट सेम पाथ से और फिर से इस बॉय के हाथ में अगर आ जाता है, तो then we can just understand here that the collision is going to be a perfectly elastic one. This is the example of perfectly elastic collision we can see, because जिस स्पीड से बॉल को थ्रो किया गया उसी स्पीड से वो फिर से वापस आ रहा है। This is an example of perfectly elastic collision. But sometimes this happens only for a rubber ball, which is elastic in nature. But if sometimes, if suppose the person throws a ball of copper, अगर एक कॉपर का बना हुआ जो बॉल है वो अगर वो थ्रो करता है, कॉपर या आयरन का बना हुआ बॉल, ठीक है, लोहे का बना हुआ जो बॉल है वो अगर इस दीवार की तरफ थ्रो करता है, तो पता चलेगा कि जाने के टाइम तो बॉल का स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे ही वो पटकेगा यहाँ पे और उसके बाद जैसे वो रिटर्न आएगा, तो रिटर्न आने के बाद टाइम वो यहाँ पे की तरफ गिर जाएगा। हम देख सकते हैं क्लियरली, and that is also depends which material is used. Sometimes it may happen that the ball is just returned back at this point here. Sometimes it may happen that the ball is just returned at this point, or it may happen that if suppose stone is thrown, अगर कोई पत्थर अगर थ्रो करते हैं तो वो तो जाके टकराएगा और ऑलमोस्ट बहुत सारा एनर्जी लॉस करेगा और ऑलमोस्ट सीधा नीचे यहाँ पे गिर जाएगा, सीधा नीचे जाके वर्टिकली बॉल के बिल्कुल साइड में गिर जाएगा। तो ये भी हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज मोस्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये जो है इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हम देख सकते हैं आराम से। बट इफ सपोज दिस बॉल इज ऑफ मेड अप ऑफ वैक्स, ठीक है, वैक्स का बना हुआ जो बॉल है या किसी चीज चिपकने वाले मटेरियल का अगर बना हुआ बॉल है, तो वो अगर थ्रो किया जाता है तो वो सीधा जाएगा और जैसे ही हमने इसको थ्रो किया तो यहाँ पे बॉल के साथ जाके वो चिपक जाएगा, इधर यहाँ पे वो अटक के रह जाएगा। So this type of collision will be actually called as this third type, that is of perfectly inelastic collision, we can see clearly. So in this case, the different type of collisions can be understood by using different examples. Even we can just take an example of uh, yes, suppose there is an example, suppose एक table है यहाँ पे, ये मान लो एक टेबल है, ओके, और इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, सपोज लकड़ी का वुडन बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और मान लो कि हमने एक बुलेट जो है वो फायर किया इस बॉक्स के ऊपर, सपोज यहाँ पे एक गन है हमारे पास, and suppose that a bullet is fired. As soon as this bullet is fired, and suppose that this bullet just moves further and just get embedded into this block, ये ब्लॉक के अंदर अगर ये बुलेट चला जाता है और दोनों साथ साथ अगर मूव करते हैं आगे with common velocity, then this is also an example of perfectly inelastic collision, because there is no relative motion between the two bodies after the collision. Collision के बाद दोनों के velocities में कोई difference नहीं है, दोनों का velocity same ही है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं perfectly inelastic collision. Now we are in a position, to define, the three types of collisions here. तो तीन टाइप के कोलिजन हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखो ठीक से। सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में। व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? हियर, perfectly elastic collision, the collision in which the momentum
as well as the kinetic energy is conserved, is called as perfectly elastic collision. Remember, momentum plus kinetic energy, मतलब momentum भी conserve होता है and kinetic energy भी conserve होता है. Both are conserved. Remember, तो जिस collision के दौरान दोनों conserve होते हैं, kinetic energy भी और momentum भी, तो उसको हम बोलते हैं perfectly elastic collision. No doubt. But if you just talk about the inelastic collision, then you can just define it as, inelastic collision is defined as नहीं सर लेक्चर में नहीं घड़ी लेक्चर में sorry. Yes, so basically inelastic collision is one in which the momentum is conserved. Okay, देखो ठीक से momentum तो conserve होता है, लेकिन the kinetic energy जो है, kinetic energy is not conserved. So that is actually called as the inelastic collision, simply inelastic collision. So momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. तो यहाँ पे ये इसीलिए उसको inelastic collision कहा जाता है. तीसरा टाइप अगर हम देखेंगे ठीक से, which is the perfectly inelastic collision. Okay, तो perfectly inelastic collision मतलब क्या होता है? तो देखो, इसको हम बोल सकते हैं कि momentum is conserved, but the loss in kinetic energy is maximum. तो देखो ठीक से, momentum तो conserve होता है, but kinetic energy is not conserved at all, but the loss in kinetic energy is going to be maximum. सबसे ज्यादा मैक्स लॉस होता है kinetic energy के अंदर. और we can also define it in alternatively in this way, that the bodies, colliding bodies, just move together after the collision. Remember, colliding bodies move together with the same velocity in the same direction after the collision. तो collision के बाद ये दोनों bodies जो है, तो वो बिल्कुल same velocities के साथ move करते हैं collision के बाद. ठीक है, जैसे कि अभी लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने देखा था, अगर रेस्ट में आ जाते हैं तो वो तो बोल ही सकते हैं ना कि ये दे आर जस्ट आफ्टर द कोलिजन दे आर जस्ट स्टिक टुगेदर, दैट मींस दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दैट इज जीरो वेलोसिटी. अगर वो चिपक गए तो इसका मतलब, अगर वो रेस्ट में आ गए, दोनों रेस्ट में आ गए, तो इसका मतलब उनका दोनों का कोलिजन के बाद का वेलोसिटी ऑलरेडी सेम है, बिकॉज वो जीरो है. लेकिन अगर जीरो नहीं भी है, तभी भी दोनों का जो कॉमन वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए. तो इन दैट केस वी कैन जस्ट कॉल इट एज अ परफेक्टली inelastic collision, no doubt. Okay, author is asking about the case when kf can be greater than ki. See, one thing, that kf can never be greater than ki, unless and until some potential energy is included in that collision. तो maybe जैसे बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर होता है,
ठीक है, अगर सपोज बॉम्ब है तो बॉम्ब जैसे ही वो रेस्ट में होता है स्टार्टिंग में, तो उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो के आई इज गोइंग टू बी जीरो वी कैन से। बट आफ्टर इट्स ब्लास्ट, तो ब्लास्ट होने के बाद क्या होगा, सपोज उसके दो टुकड़े हो गए, जो एक टुकड़ा इस तरफ चला गया और एक टुकड़ा इस तरफ चला गया, तो इन दिस कोलिजन वी कैन जस्ट से दैट नॉट कोलिजन बट एक्सप्लोजन वी कैन से. So in this case, the Kf is certainly not going to be zero because the final kinetic energy is something is there, because both of these parts of this bomb are moving with some velocity after the collision. So in this case, we can just say that this Kf is not zero. So Kf is greater than Ki. ये केस हमको मिलता है, लेकिन it is possible only when some other amount of other kind of energy has been converted into the kinetic energy. कुछ ना कुछ दूसरा टाइप का जो एनर्जी है, जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी वी कैन से इन दिस केस हियर व्हेन द बॉम्ब इज एट रेस्ट, इट हैज सम स्टोर्ड एनर्जी व्हिच मे बी केमिकल एनर्जी वी कैन से. तो ये जो केमिकल एनर्जी बॉम्ब के अंदर रखा हुआ होता है, तो वो केमिकल एनर्जी एक्चुअली कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर वी कैन से. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, एंड ड्यूरिंग दैट केस आल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल होल्ड ट्रू, नो डाउट. Law of conservation of momentum always holds true. Okay, because the momentum of this part is in this direction and the momentum of this another part is going to be in this direction, opposite direction, no doubt. So in this case, the law of conservation of momentum is going to be true in all the cases. No case is left behind, but kinetic energy may be less than or may be equal to or may be greater than also in some cases in which another form of kinetic energy maybe like chemical energy or maybe in some cases the nuclear energy, क्योंकि न्यूक्लियस जब ब्लास्ट होता है, न्यूक्लियस भी जब ब्रेक किया जाता है, तो उस प्रोसेस के अंदर भी जो उसके टुकड़े हैं वो अलग अलग टुकड़े अलग अलग डायरेक्शंस में थ्रो किए जाते हैं. तो इस ब्लास्ट के अंदर भी क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी है या न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, and that energy is just converted as a or appear as a kinetic energy of all the parts in this case here. तो उसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि kinetic energy after the collision और after the explosion में भी, उसको collision बोलते ही नहीं है, उस केस में उसको क्या बोलते हैं, explosion बोलते हैं. तो उस explosion के अंदर kinetic energy create होता है. Create means actually it does not create but actually just converts from another form of energy, potential energy in some case, and into the kinetic energy. तो कोई another kind का potential energy जो है वो kinetic energy के अंदर convert होता है, और ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि the final kinetic energy is going to be greater than the initial kinetic energy, but we can call it as a explosion better in a better way instead of calling as a collision. Collision के दौरान तो mostly kinetic energy जो है after collision कम ही होता है. हाँ, इट मे बी पॉसिबल दैट ये तुमको कंफ्यूजन इसकी वजह से होता होगा कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक इलास्टिक मटेरियल होता है जो कि जो अगर सपोज हम एक बॉल है वो अगर नीचे डालते हैं तो वो जिस हाइट से हमने इसको नीचे डाला था उससे भी ऊपर चला जाता है, बट दैट इज एक्चुअली अ डिफरेंट कंसेप्ट. एंड अगेन इन दिस केस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर सपोज हमने इसको सिर्फ रिलीज किया तो उसकी वजह से वो सिर्फ रिलीज किया तो उसकी वजह से वो जितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अटेन नहीं कर सकता है. हाँ, अगर हमने उसको जाने के टाइम में अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर फेंक दिया, मतलब थ्रो किया, नॉट रिलीज जस्ट बट थ्रोन, तो अगर उसको हमने नीचे के डायरेक्शन में अगर थ्रो किया तो उसकी वजह से जितना काइनेटिक एनर्जी हमने उसको दिया था उसमें से कुछ लॉस होने के बाद भी जो काइनेटिक एनर्जी बचेगा वो उससे मतलब ज्यादा हो सकता है. लेकिन this is just another concept, again it is another concept, ये अलग concept है. तो इसमें लेकिन इसमें भी समझ सकते हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करने के लिए हमको जो उसको हमने काइनेटिक एनर्जी दिया था और जो उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से अटेन किया, यहाँ पे जाने के बाद अटेन किया, वो दोनों ऐड करने पड़ेंगे हमको. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल एक्चुअली बी द सम ऑफ the kinetic energy at the time of projection plus kinetic energy attained by the ball due to gravitation. ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है वो एक्चुअली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगा. एंड इफ सपोज द कोलिजन टेक्स प्लेस एंड इफ सपोज दिस कोलिजन टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट द काइनेटिक एनर्जी after the collision is going to be less than this sum, then we can call it as a inelastic collision.
But if it is equal to this sum, then we can call it as a elastic, perfectly elastic collision. But if suppose this sum, but obviously ये हम समझ सकते हैं कि whatever is the final kinetic energy of the ball is going to be can never be greater than this initial kinetic energy here, which is the sum of kinetic energy of projection plus kinetic energy obtained by the ball due to gravitation. हाँ, this kinetic energy, final kinetic energy may be greater than this kinetic energy of projection, no doubt. प्रोजेक्शन का जो काइनेटिक एनर्जी है उससे ज्यादा वो हो सकता है, या एक काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय ड्यू टू द ग्रेविटेशन उससे ज्यादा हो सकता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, नो डाउट, बट इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द सम एक्चुअली. तो दैट इज वी आर इंटरेस्टेड इन सम, बिकॉज सम जो है, सम इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी हमने उसको दिया एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन प्लस जो काइनेटिक एनर्जी उसने अटेन किया व्हाइल मूविंग ड्यू टू द ग्रेविटेशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से भी उसका स्पीड बढ़ेगा कि नहीं जरूर नीचे जाने के टाइम, तो ग्रेविटी भी तो उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी देगा. व्हाटएवर वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल in moving it downwards will impart some gravitational kinetic energy in it, and this gravitational kinetic energy will just get added to this kinetic energy of projection which is given at the time of projection, and the total kinetic energy will become the initial kinetic energy of the ball before the collision, and that ball will have this much kinetic energy before the collision, and if it loses some kinetic energy during the collision, then it will have the final kinetic energy which is less than this initial one. Or if suppose it doesn't lose any kinetic energy, then it will have same kinetic energy after the collision. But if it loses its all kinetic energy, then it will be just stick to the ground only. But in no case this final kinetic energy can be greater than this ki itself, no doubt. ठीक है, तुम करके देखो, और कोई एग्जांपल भी अगर मिले तो मुझे भी बताओ जिसके अंदर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट ग्रेटर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विदाउट यूजिंग एनी पोटेंशियल एनर्जी. कोई भी पोटेंशियल एनर्जी यूज किए बिना अगर तुम फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा बना सकते हो तो इट विल बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगेन. ठीक है, मींस हमको ये मानना पड़ेगा फिर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इज जस्ट false or it is not valid, ऐसे ही मानना पड़ेगा. That is not true actually. So basically the law of conservation of the law of conservation of energy is a very foundation or fundamental law in the nature which tells us simply that the energy can never be created or be destroyed, but it can be converted from one form to another form. So if we can convert the potential energy of some kind into kinetic energy or kinetic energy into potential energy, no doubt, but we cannot create any energy. ठीक है, बिना पोटेंशियल एनर्जी यूज किए हम कोई भी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कोलिजन के बाद का है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो ऐसा अचीव नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो ये बात समझ लो ठीक से. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ इलास्टिक, inelastic and perfectly inelastic collisions. Now we can just define the concept of coefficient of restitution now. See here, what is the coefficient of restitution? Is simple सा concept है, coefficient of restitution. Coefficient of restitution gives us an idea about how much the collision is going to be elastic. Remember, the coefficient of restitution is always denoted by E, and it is defined as the negative ratio of the relative velocity after collision to the relative velocity before collision. Remember, so the relative velocity after collision upon relative velocity before collision, and the negative ratio of that is actually called as the coefficient of restitution. If we just consider the two bodies, just like we have just considered in the last case, that if suppose the body of mass m1 is moving with velocity u1 and the body of mass m2
is suppose moving with velocity u2 in the same direction suppose. Obviously u1 is more than u2, so u1 bada hai u2 se, and because of that they just collide with each other at some point and exerts the force on each other. And after the collision, suppose this body, the first body starts moving with the velocity v1 and the second one starts moving with the velocity v2. In this case v1 is going to be less than v2. ठीक है, तो v2 ज्यादा होगा, v1 कम होगा, क्योंकि after the collision the first body will just get slowed down and the second body will just get speed up like that. And because of that we can just say the speed of the first body has been actually increased and the speed of the speed of the first body has been actually decreased and the speed of the second body has been increased due to the collision. Okay, so but if we just think about the relative velocity before the collision, what does it mean? Relative velocity का मतलब क्या होता है? The velocity of one body with respect to another. So in this case here, u1 is going to be greater than u2. So what will be the relative velocity of the before the collision? We can say, and what is the relative velocity after the collision? So अगर ये first body इसको अगर हमने 1 बोल दिया और second body को 2 बोल के रखा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी ए, ये उसको हम बोल देंगे. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी ए will actually be u2 minus u1. This is initially and before collision, okay. But if we talk about for after collision, then the relative velocity of body b with respect to a will be v2 minus v1 here, and hence we can just say this will be this minus sign kept as it is, and here the relative velocity after collision will be v2 minus v1, no doubt. And at the same time relative velocity before the collision comes out to be u2 minus u1, no doubt. And hence if we just simplify this further, then we can just get, इसको भी हम थोड़ा और अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये या तो ऊपर या तो नीचे हमको डालना पड़ेगा. But it will be better to put it in the denominator just because u1 is actually going to be greater than u2. So that's why u1 minus u2 makes sense. And that's why we can just push this minus sign in the denominator so that this u2 will become negative and this u1 will become positive. So that we can write this as u1 minus u2 in the denominator, correct? So this is u1 minus u2 and numerator still containing v2 minus v1 as it is, no doubt. So this is actually going to be the expression for the coefficient of restitution, and it gives us an idea about how much the collision is going to be elastic. क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि perfectly elastic collision के अंदर क्या होता है, momentum, kinetic energy दोनों conserve होते हैं. So in the case when the momentum and kinetic energy both are conserved, in that case the coefficient of restitution actually happens to be 1, which is the maximum here in this case, remember. And in the case of this inelastic collision, the coefficient of restitution happens to be between 0 and 1. Remember, this is the significance of this coefficient of restitution. And in case when the perfectly inelastic collision takes place, in which the bodies lose maximum kinetic energy or the bodies just move together after the collision, so in this case the coefficient of restitution happens to be 0 actually. So this coefficient of restitution becomes 0 in case of perfectly inelastic collision. It remains between 0 and 1 in case of this inelastic collision, but it becomes 1 for the perfectly elastic collision, remember. तो coefficient of restitution का वैल्यू जान के ही हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी collision, whether it is elastic or it is inelastic or it is perfectly inelastic precisely. तो coefficient of restitution का जो वैल्यू है वो अगर 0 आया या 0 to 1 के बीच में आया, just like 0.5 या 0.3 या 0.8, अगर 0.8 आता है तो उसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि this collision is more like elastic. ठीक है, 0.9 है या 0.99 है, you can just say that it is a 99% elastic. Okay, but if suppose it is 0.5, then we can just say that the collision is just 50% elastic. That means it is an inelastic collision. So when we talk about the inelastic collision, we have to talk about the percentages. Okay, the collision is not elastic actually, but it may be 50%, it may be 30%, it may be 20%, or just 10% elastic.
But if it is if it is elastic in a very small extent, like अगर 0.1% या 1 या 2%, 3% इलास्टिक है, तो इसका मतलब उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, it is just like 0.01 or 0.02. That means it is nearly equal to 0, and that's why we can just mark it as a near about perfectly inelastic collision in this case. So here this value of coefficient of restitution just gives us an idea about whether the collision is perfectly elastic, perfectly inelastic, or just inelastic by using these values. तो ये values से हमको पता चलता है. और अभी ये जो perfectly elastic मतलब ये जो coefficient of restitution है, उसका definition ऐसा क्यों दिया गया, और उस definition का और क्या significance है, और ये किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन और डिटेल में जो किस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. सो फॉर टुडेज लेक्चर we'll just stop at this point.